one similarly. Okay. So the containers of a particular lubricant is known to be normal distributed with a variance equals to 0.03 liter. Test the hypothesis that sigma square equals to 0.03 liter against the alternate hypothesis sigma naught square. So the sample point that is given to you as this one. So what you have to do, what you need actually, the chi square equals to n minus 1 s square by sigma naught square. So you have to find out the s square first, then sigma naught square that is known to you, that is 0.03. Okay, not known actually, under the null hypothesis sigma naught square is 0.03. So just put it here. Okay, first find out the s square and put it here. Okay, so after finding the s square we have calculated and taken the square root. So s is equals to 0.246 or s square equals to this one, s square equals to 0.246 square. So by solving it we got that it is equals to 18.1548. And what kind of test it is? It is a two-tailed test, because the alternate hypothesis is sigma square not equals to sigma naught square. So as it is a two-sided test, so actually so this thing actually wrong. एक्चुअली इसीलिए मैं बता रहा हूँ, यदि नोट्स तुम लोग देख रहे हो तो ये पार्ट इसका गलत है. ठीक है. Oh sorry, ये this one is correct. This one is correct, but this one is wrong as it is not symmetric. Okay, so chi square with 9 degrees of freedom, this point is chi square 0.005. This point is equals to 589. 23.589. Okay, at 9 degrees of freedom. Okay, and this point somewhere here, that is chi square 1 minus 0.005, that is equals to 0.995. This point chi square 0.995, that is 1 point something. Okay, so obviously 18.15 that lies between this to this interval. 18.15 lies between, belongs to 1 point something, 1.6 or something, and 23 point something. Obviously the 18 lies between this interval, so that's why it is accepted actually. It is accepted that the sigma square equals to 0.03 from the sample itself. Okay. So basic idea hypothesis testing का ये है, तुम्हें टेस्ट स्टैटिस्टिक का वैल्यू फाइंड आउट करो, अल्फा चूज करो, अल्फा के हिसाब से टू साइडेड टेस्ट है या वन टेल टेस्ट है, उसके हिसाब से देखो, वैल्यू फाइंड आउट करो, कंपेयर करो टेबुलेटेड से, देन टेक द इन्फ्लुएंसेस. दैट्स ऑल. ठीक है, जितना हो सके प्रैक्टिस कर लेना है इसको. सो और भी एग्जांपल्स है, बाकी जो एग्जांपल्स नोट्स में है वो तुम लोग देख लेना. ठीक है. देन मैं टू सैंपल टेस्ट वेरिएंस बता देता हूँ. सो इन द टू सैंपल टेस्ट वेरिएंस, okay, we need the F statistic. So यहाँ पे chi-square statistics था, but what happened actually in case of the two sample test, that means two samples are there, and here the variance is sigma 1 square, here the variance is sigma 2 square. You want to check that whether these two variances are equal or not. Okay, so S naught here, sigma 1 square equals to sigma 2 square against the alternate hypothesis H1, which in one case is among the one of the case alternate hypothesis.
Okay, sigma 1 square equals to sigma 2 square, which is the ratio f sigma 1 square s2 square, where s1 square and s2 square are the variance computed from the two samples of size n1 and n2. If the two populations are approximately normally distributed and the null hypothesis is true, then the ratio f, ये जो है s1 square by s2 square एक्चुअली क्या है, f स्टैटिस्टिक हम जो फाइंड आउट करते हैं n minus 1 s square by sigma naught sigma square divided by sigma 1 square n minus 1 ये s1 square मान लो s2 square divided by sigma 2 square. ठीक है, तो होता क्या है कि हम यहाँ पे जो अंडर नल हाइपोथेसिस सिग्मा 1 स्क्वायर इक्वल्स टू सिग्मा 2 स्क्वायर, तो दैट्स व्हाई दिस टू गेट कैंसल्ड. और यदि तुम्हारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स यदि टोटल सेम है और हम डिवाइड करते हैं डिवाइडेड बाय इस डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ये n1 minus 1 ये n2 minus 1, सो n1 minus 1 एंड हियर आल्सो n2 minus 1. तो हम जब chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को डिवाइड करते हैं उससे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से, एंड chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय इट्स डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, दिस फॉलोज ए f डिस्ट्रीब्यूशन. सो दैट्स व्हाई n1 minus 1 यहाँ पे कैंसिल हो गया, n2 minus 1 यहाँ पे कैंसिल होगा, सो बचा क्या, सिर्फ s1 स्क्वायर बाय s2 स्क्वायर. सो दिस फॉलोज ए f डिस्ट्रीब्यूशन विथ n1 minus 1, that means v1 and v2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. ठीक है, ये उसका रीजन है एक्चुअली. ओके, सो एफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाकी जो भी इन्फ्लुएंस है, और एफ डिस्ट्रीब्यूशन भी chi स्क्वायर जैसा नॉट सिमेट्रिक. ठीक है, सो उसका भी सेम टाइप का इन्फ्लुएंसेस रहेगा. और एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें एफ डिस्ट्रीब्यूशन में कि v1 एंड v2 और v2 v1 दोनों का वैल्यू डिफरेंट है. सो यदि तुम्हारा अपर में यदि सिग्मा 1 है तो ऊपर में v1 रहेगा और नीचे v2 रहेगा, और यदि रिवर्स है तो यहाँ पे v1 v2 और v1 कंसिडर करके तुम टेबल में देखना, नहीं तो फिर गलत आंसर आएगा. ओके, सो दिस इज फॉर द टेस्टिंग ऑफ द. देन बाकी एग्जांपल्स तुम लोग थोड़ा देख लेना इसको. ओके, because of shortage of time I have to complete the syllabus, so that. Okay, so goodness of next is goodness of fit test. This is also most widely used in many fields actually, goodness of fit test. और मैं बताऊँ इसको कहाँ पे और क्यों यूज किया जाता है. वो बहुत okay, so goodness of fit test is used. Here we consider the test to determine if a population has a specific theoretical distribution. Okay, the test is based on how good a fit we have between the frequency occurrence of the observation in an observed sample and the expected frequencies from the hypothesized distribution. इसका मतलब मान लो कि हमारे पास कुछ पॉइंट्स है, हम टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या ये पॉइंट्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहा है या यूनिफॉर्म से आ रहा है. देन वी कैन यूज ए गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट कि कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहा है चेक करने के लिए हम जनरली गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट यूज करते हैं. जैसे कि तो उसके लिए भी सेम प्रोसीड्यूर है. तो यहाँ पे सिर्फ जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है दिस वन, chi square equals to I equals to 1 to k OI minus EI whole square divided by EI, where chi square is a value of a random variable whose sampling distribution is approximated very closely by the chi square distribution with v equals to k minus 1 degrees of freedom. Okay, the symbol OI and EI represent the observed and expected frequencies respectively for the ith cell, and k represent the number of cell. Okay, so हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी.
हम कितना मतलब कि ये वैल्यू यदि है तो इसका एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होगा, सो उससे सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर करेंगे. So the critical region is chi-square equals to chi-square greater than chi-square alpha and हाँ रिजेक्शन रीजन इसका कौन सा है, यदि तुम्हारा ये chi-square अल्फा पॉइंट है, ये तुम्हारा रिजेक्शन रीजन है. ठीक है, ये रिजेक्शन रीजन हो गया. ओके, 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ग्रेड्स इज यूनिफॉर्म. ओके हाँ, सो ये तुम्हारा रिजेक्शन रीजन मींस chi-square ग्रेटर देन chi-square अल्फा, दिस रीजन, दिस इज द रिजेक्शन रीजन. ओके, देन एक एग्जांपल देखते हैं कि मान लो कि ये तुम्हारा डिफरेंट ग्रेड्स स्टूडेंट्स को मिला, ठीक है. वी वांट टू टेस्ट whether these grades are uniformly distributed or not. So what is the meaning of this uniform distribution? That all got the same mark or not. यदि देखो, यदि all got the same mark का मीनिंग क्या है, ये मे बी किसी को 21 मिला, 22, 23, 25 इस टाइप का, तो एक दिमाग में आता है ना कि हाँ आसपास ही मार्क है, तो उन्होंने पे हर किसी को 20 मिला है. तो यहाँ पे भी हम लोग वही चीज टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या यूनिफॉर्म मार्क मिला है हर किसी को. ओके, so distribution of the grades is uniform against the alternate hypothesis distribution grades are not uniform. So here k equals to 5, the number of cells. Okay, so 5 means 5, the degrees of freedom is 5 minus 1. Okay, so the expected frequency क्या होगा, represent expected frequency, that is equals to 14 plus 18, 16 तक ऐड करो and divided by 5 एलिमेंट्स है तो 5, तो डिवाइड करने से मिला हमें sorry. Okay, so if all got the same mark, then this all that must be equals to 20. So this is the expected frequency. Okay, this is the expected frequency. So OY minus EI whole square divided by EI. Okay, so do it for all numbers. So probability of chi-square greater than chi-square alpha is 0.05 with k minus 1 equals to 5 minus 1, 4 degrees of freedom. Okay, use chi-square distribution table. Okay, chi-square equals to 10 greater than chi-square alpha, क्योंकि यहाँ पे हमें 10 मिला है and chi-square alpha is 9.488. So obviously in the right hand side, so that's why it falls under the rejection region. So we reject the null hypothesis that all didn't get the uniform grades. All grades and distribution of grades is not uniform. किसी को ज्यादा मिला है, किसी को कम मिला है. यूनिफॉर्म यदि होता देन 20, 23, 21, 24, यहाँ पे 18, 19, 17 इस टाइप आसपास में ही ज्यादा मिलता. ठीक है, देन वी कैन से दैट इट इज यूनिफॉर्म. बट ये बहुत ज्यादा, किसी को 32, किसी को 14, very much variation, so the grades are not uniform. Is it clear? So और भी इसके examples है, so that example you try to do it by yourself. Okay, already there is the notes is available with you. Okay, या just मैं hint दे देता हूँ कि इसमें क्या है ये. और एक क्वेश्चन,
Okay, fine. So here a coin is thrown until a head occurs and the number of a number x of tosses recorded. After repeating the experiment, 256 times, we obtain the following results. So 136 to 1 appears 136 times, 2 appears, 2, that means 2 heads occur, 60 times 3 head occur, 34 times, okay, like this. Then so test the hypothesis 0.05 level of significance that observed distribution of x may be fitted by geometric distribution. तो हमें ये पता है कि यदि मतलब कि यदि कोई पर्टिकुलर चीज है, मतलब कि फर्स्ट सक्सेस ना होने तक हम यदि टॉस करते जाते हैं, ओके, तो ये मतलब एक ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं यहाँ पे। So probability of getting a head that is equals to, okay, so ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा बोल के हम लोग को उसको प्रूव करना है। So we know the geometric distribution gxp that is equals to p into q to the power x minus 1. Okay, then probability of getting a head is 1 by 2, probability of getting a tail equals to also 1 by 2. Okay, so geometric distribution p into q to the power x minus 1. So like this, go on doing. ठीक है, so these are the expected frequencies. Okay, so these are the expected frequencies and already you have the original frequencies, ठीक है। So expected frequencies आ गए, मतलब कि probability से calculate करके, then in order to calculate the expected frequencies, ये हो गया मतलब कि ये probabilities calculate किया हम लोग actually, ठीक है। probabilities calculate किए और 256 times हो रहा है, तो 256 into the given probability, so we got the answer 256 into 1 by 8, 1 by 4, like this. Okay, so now this chi square, that is equals to oy minus ei whole square divided by ei, that is 136 minus 128 square by 28, like this. जितने भी है, so determine the critical value chi square alpha. Okay, so the degrees of freedom is 7, then like this. So here we got the 3.125, okay, at the 7 degrees of freedom, okay, and we have chi square alpha is 14.067. So obviously as it is less than that, so it is accepted. Okay, so we failed to reject the null hypothesis or we are accepting the null hypothesis, ठीक है। तो इस तरीके से हम गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट करते हैं। एनी डाउट? यहाँ तक कोई डाउट किसी को?
Okay, so test for independence. Okay. Okay, so test for independence. So in this test for independence, what we used to do is we have two variables. Okay, we want to test that whether they are independent or they are dependent on each other. So in this case, so we can use this method. Okay, so the Kaiska test procedure can also be used for the testing of the independence of the two variables of classification, not numerical, any classification variable. For example, smoking and disease, cancer. Okay, so smoking causes cancer. Okay, so are they independent or they are related actually? So which is so for how to do test for independence? Okay, first same लेवल अल्फा चूज करेंगे, ठीक है. The null hypothesis H naught, alternate hypothesis H1. That is, we have to test the null hypothesis H naught against the alternate hypothesis H1. So chi square, that is equals to OI minus EI whole square divided by EA. Okay, जो था chi square distribution. ठीक है, तो expected ऑब्जर्व तो है तुम्हारे पास है, बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज टू फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड वन. तो एक्सपेक्टेड कैसे फाइंड आउट करोगे? रो टोटल इनटू जो भी रो है. ओके, so EI that is equals to row total into column total divided by the grand total. That means ये जो एक छोटा सा एग्जांपल दिखाया था, अब बाकी प्रोसीड्यूर सेम है और टोटल नंबर ऑफ n इक्वल्स r minus 1 c minus 1. Okay, and same, it will fail to reject the null hypothesis if chi-square is less than chi-square less than chi-square alpha. Okay, so जैसे कि ये एग्जांपल देखो, this one is a male or female. Okay, then a random sample of 90 adults is classified according to the gender and number of hours of television watched during the week. So now we want to test different 0 1 level of significance and test the hypothesis that the time spent watching television is independent of whether the viewer is a male or female. Okay, so what you have to do, first of all, just add these two. Okay, so add करने के बाद तो है 42, 48, 90 grand total. Okay, 46. Right now, what you have to do, that here 15 is there. So right now you need to calculate this 42 into 44 divided by 90. Okay, so this becomes your expected frequency. Okay, similarly all all others
in this case, okay, this is 44, 48 divided by 90. Okay, in this way you have to calculate all the values. Okay, then this is the observed and this is the expected. Okay, then बाकी सब solve करोगे, then what will happen? Okay, ये क्वेश्चन को छोड़ दो. Okay. ओके, सो यहाँ से तुम्हें आंसर क्या मिलता है आफ्टर सॉल्विंग इट? सो काय स्क्वायर दैट वी गॉट वैल्यू स्क्वायर का वैल्यू कितना सब सॉल्व करने का. ओके, ओके, तो यहाँ पे ये वाला थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, तो सिमिलर टाइप का है. ठीक है, सो ये क्वेश्चन भी देख लेना तुम लोग. ओके, टेस्ट फॉर होमोजेनिटी. I think this question is clear. Then next is independence हो गया. ओके, हो गया. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? हाइपोथेसिस टेस्टिंग, इंडिपेंडेंस, नहीं तो फिर नेक्स्ट टॉपिक में जाऊंगा. कोई डाउट है तो पूछ लो. ओके, तो फिर नेक्स्ट टॉपिक शुरू करता हूँ. दैट इज द रिग्रेशन लाइन. So regression analysis or regression line, that is basically gives you the linear relationship or between the two variables. Also, we have used this term linear relationship before while studying the correlation and covariance, but this thing something different. Okay, so what difference we are getting here? Let's see.
So linear regression, in linear regression, what we used to do is we are getting a model. Okay, so we are getting a model here. What kind of model? One statistical model it is. So y equals to beta naught plus beta 1 x. This kind of sometimes the error epsilon, so that is the error term. Okay, y equals to beta naught plus beta 1 x plus epsilon. Most of the time this is the actual model. So epsilon is the error term. क्योंकि हम जब भी स्टैटिस्टिकली कुछ भी एस्टिमेट करेंगे एग्जैक्ट एस्टिमेशन नहीं हो पाएगा exactly that all values cannot be equal to the parameter value, sorry, population parameter value. So that's why there's some error arises. So that's why y equals to beta naught plus beta 1x. So y is one of the variable, x is another variable, and you want to find out the relationship between the linearly how they are related. Okay, so this kind of relation is this is the regression. Okay, this topic is this part is the regression, where beta naught, that is the intercept, and beta 1 is the slope. The concept of regression deals with the finding the best linear relationship between y and x, quantifying the strength of that relationship, and using the method that allow for the prediction of the response values given values of the regression x. Okay, so एक होता है तुम्हारा रेस्पॉन्स वेरिएबल जैसे कि y, ठीक है, जो कि y जो है y, it is the response, or we can say that it is a dependent variable. Okay, dependent variable like this. Okay, and this x is termed as independent variable. Independent variable. Beta naught or beta naught and beta 1, these are the intercept and the slope. Okay, the concept was then fitted regression में. तो हम क्या करेंगे, ये जो मॉडल है बेसिकली हम उसको फिट करके हमें ये these two are the unknown parameters. Which one? This beta naught and beta 1. These two are the unknown parameters which are to be estimated. Okay, which are to be estimated. So so an important aspect of regression analysis is very simple to estimate the parameters beta 1, beta 2. So we use the least square method in order to estimate these parameters. Okay, so उसके बाद हम estimate करने के बाद उसको लिखते हैं y hat. Why y hat? The estimated value of y. ठीक है, तो ये एक्चुअल तुम लोग थोड़ा विजुअलाइज कर देता हूँ कि ये किस टाइप का डाटा रहता है, क्या है. ओके, और जस्ट सी. सो देयर आर सम पॉइंट्स, मे बी y के अंदर में कुछ पॉइंट्स होगा एंड x के अंदर में कुछ पॉइंट्स होगा. ठीक है, मान लो कि y1, y2, y3 ऐसे करके yn डाटा पॉइंट्स है. हियर x1, x2 ऐसे करके xn पॉइंट्स है. ओके, x1 to xn, y1 to yn, y1 to yn एक पॉइंट से. तो ये डाटा पॉइंट्स है, इसको तुम स्कैटर प्लॉट करोगे, इट मींस यहाँ पे x वैल्यूज, यहाँ पे y वैल्यूज, उसको यदि स्कैटर प्लॉट करोगे, मान लो कि ये कुछ ऐसा टाइप का दिख रहा है. मान लो, just imagine. Okay, now actually what we are doing, we are trying to find out a line which passes through this
passes through constituting मतलब कि all points से क्या होना चाहिए, इनका जो डिस्टेंस है ना वो मिनिमम होना चाहिए। यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से हर किसी के जो भी पॉइंट है यहाँ से इसका और ये जो लाइन का फिटेड रिग्रेशन लीनियर लाइन, इनका डिफरेंस जो है वो होना चाहिए एक मतलब कि मिनिमाइज। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज। सो ये जो पॉइंट्स तुम्हें दिख रहा है ना, ये एक्चुअली x1 y1 है, या ये को जो पॉइंट होगा x2 एंड y2 x3 y3, ये सब पॉइंट्स है, ठीक है। और ये पॉइंट से ये जो रिग्रेशन लाइन हम लोग फिट करना चाहते हैं, दैट मस्ट बी द डिस्टेंस मस्ट बी मिनिमाइज्ड। ओके फाइन। सो and by minimizing the distance we try to find out the estimate these values। okay, so कैसे minimize करते हैं? so y minus beta naught minus beta 1 x। so इसका जो स्क्वायर है, ओके इसका जो स्क्वायर का है उसको समेशन करेंगे, we'll try to minimize this। okay, so we'll try to minimize this। और जब मिनिमाइज करते हैं, मिनिमाइज करने के बाद b1 का वैल्यू ये आता है और b0 का वैल्यू ये आता है। ओके, सो मिनिमाइजेशन प्रोसीड्यूर है तुम्हारा पता होगा। यदि तुम्हारे पास दो वेरिएबल्स है तो मिनिमाइजेशन कैसे करते हैं? बाय टेकिंग द पार्स। इसको मान लो कि l है, सो डेल l बाय डेल b0 equals to 0 and del l by del b1 that is equals to 0। ये both try to find out both the partial derivative is equals to beta naught and beta 1। b1 and b naught and b1, these are the estimate of beta naught and beta 1 actually। यहाँ पे लिख देता हूँ, these are estimate of beta naught and beta 1। ओके, एस्टिमेट ऑफ बीटा नॉट एंड बीटा 1, या तुम इसको बीटा नॉट या ऐसे नहीं लिखे बीटा नॉट हैट, ओके, एंड बीटा 1 हैट भी लिख सकते हैं। ओके फाइन, देन इसको हम मिनिमाइजेशन करके ये वाला वैल्यू आता है। आई विल नॉट गो थ्रू द प्रूफ ऑफ दिस वन, ठीक है, जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दिस। ओके, सो एक प्रॉब्लम में जाते हैं। सो एक्स एंड वाई का डिफरेंट वैल्यूज इस टाइप का है, तो तुम्हें कैसे मतलब कि सॉल्व करना पड़ेगा रिग्रेशन लाइन से। okay, so what you have to do this is x and y values, x values, y values are there, so estimate the linear regression line by using this one। okay by using this these formulas। okay, so
Okay, so according to the table, just try to adjust. So x into y, x minus x bar, y minus y bar, x minus x y into y minus y bar, xi x minus x bar whole square, like this. Just try to find it out. Okay, huh? Then then do it. Xi minus x bar, y minus y bar. So take the summation. So yeah. Then try to find it out. Then b1 and b0 में वो वाला corresponding values को put कर दो. Then okay, b0 equals to y bar minus b1 x bar. So this equals to this one. Okay, now the regression line is y hat, that is equals to b0 plus b1x, like this. Right now if someone asks you or that if ये तो हो गया kind of one ये model बन गया तुम्हारा, y hat equals to b0 plus b1x, that is equals to this. Okay, then then there is a question that a person who received a grade of 85 on a middle term, you know, I had equals to this one, for y hat equals to क्या होगा, in place of x, the in place of x just down 85, ठीक है, ये x की जगह ओके. उसके बाद 85 को यहाँ पे पुट करने के बाद जो भी वैल्यू आया उसको डायरेक्टली यहाँ पे y hat equals to b0 plus b1x. So b0x and b1x both are calculated in this way. And उसके बाद b0 कैलकुलेट करने का y hat में कैलकुलेट करना पड़ेगा for a particular value. Okay. Okay. So next is this is the way you have to find the regression. तो अभी जितना चीज बता रहा हूँ मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड है, तो फॉर्मूला वगैरह देख लेना, देन यू कैन कैलकुलेट इट इजीली. ठीक है. नेक्स्ट इज द कोरिलेशन. देयर correlation details I think already I have discussed, but right now we'll define a term as the coefficient, correlation coefficient. Okay, and what is the formula related to which you have to, and how to calculate this coefficient. Okay, correlation coefficient, it is defined by r equals to sxy by sx into sy, where sx and sy are standard deviation of x and y respectively. Sxy is the covariance of xy. Okay, that is expectation of xy minus x bar y bar, and expectation of xy is equals to summation of xi into yi divided by n. Okay, so and sx is this one, sy is this one, root over of summation of I equals to 1 to n yi minus y bar whole square by n minus 1, and this is xi minus x bar whole square by n minus 1. Okay, so in this way, by using these formulas, you have to calculate the correlation coefficient, and we also know that it lies between -1 to 1. Negative means there is a negative relation between them, and if it is positive, there is a positive relation. That means if one increases, other increases, and if it is a negative correlation, then one increases, other decreases. Okay, so this is the idea of the correlation coefficient.
most of the time the question arises, what is the if correlation is there, then what is the need of regression analysis? Yeah, regression coefficient. So there you can see that say that correlation coefficient actually it has it gives you a single value which gives you the any information about the whether they are a positive or negative correlation, kind of this one. But the regression, you can calculate the you can have you are doing the analysis. Okay, you are predicting the value also. Okay, so you are analyzing it, you are predicting the values. Okay, and other many things are there that right now in the syllabus that is not there. Okay, so okay, so your course completed up to this. So एक प्रॉब्लम दिखा देता हूँ कैसे हम कोरिलेशन कोफिशिएंट को कैलकुलेट करते हैं. Okay, compute and interpret the correlation coefficient for the following grades of 6 students selected at random. Equals to this. So mathematics grade and English grade. You want to find out is there any correlation between these two grades. So रिग्रेशन हो या तुम्हारा कोरिलेशन हो, यहाँ पे दो, यहाँ पे अभी मतलब कि किसी के बीच में वेरिएबल्स के बीच में हमें रिलेशनशिप चेक करना होता है. ओके ओके सो देख लो इसको, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है and you have to remove the formula and accordingly you have to solve it. If you have any issue then you can ask me. So everything is completed. If anybody have any doubt you can ask me. ओके एक तो थोड़ा रिवाइज कर देते हैं तो फिर क्या क्या चीज हम लोग अभी देखें. First thing we have a correlation coefficient. Okay, and what is the properties already I have discussed with you. Okay, and other examples are there in the notes. Please try to refer it. Okay, then we have found out the regression coefficient. Okay, regression coefficient, uh, how to find out the regression coefficient and what is the use of it, how to uh, predict like here we have predicted for a other data point that is not there in this. Okay, okay, then we have discussed about the whether two variables, two categorical variables are independent or not, and or to check that we need this chi-square goodness of fit test, and also we have discussed the chi-square goodness of fit test for the elements uh, for them, for which if you want to know the distribution, you want to check for a particular kind of distribution, then you have to use the goodness of fit test. Okay, okay, fine. Then any issue then you can
right now. Okay. Okay then. All the best for exams. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.